Now I'm ready to begin. So whenever I solve any VRC question, I just look at the passages. This was on the science. This is something related to intelligence, human intelligence. This one is interesting because I kind of like something which is more related to environment, nature, biology. Decadence is boring. I don't really like it, but I'll just say look at it once. This is what Chomsky, again a philosophical art. So maybe I would preferably go with this, and let's see. There has to be an option for widening the screen, but it's not here. Okay. What constitutes intelligence? Slime moles, ants, neurons, ChatGPT, fish holes. So some not a listing of things are given. Perhaps all of the above, none at all. Okay, this age-old question arises, especially when confronted with human abilities. Okay, do you have to answer without what exactly? हाँ, so before actually giving out what it is, उसका parameter define करना जरूरी है. थोड़ा कुछ मुझे कुछ income fancy जो product survival. So we are basically tracing the definition. Is this related to human expectations? हाँ, यहाँ पे human factor बहुत involved है. Expectations that vary among individuals, much like Monty Python's Spanish Inquisition, they often appears in unexpected places. I don't know ये क्या बात कर रही है, but ठीक है. So intelligence is not the most natural. Ability region. So intelligence not just for survival. पहले ही passage की बात को काटा इन्होंने. Without any awareness of humans. Yet when other tracing successful media, this temptation to attribute a single. So मतलब ये पूरा flawed है. ये बता रहा है concept. You can't attribute it to just intelligence. This evidence by increasingly sophisticated tools developed despite its nebulous का मतलब तो नहीं पता है, but ठीक है. Something in birth for prompting research. Reach this extent on the smartphones and padlocks which अच्छा AI के बारे में बात हो गई. Intelligence also created in research of this even though ongoing SETI efforts. Nonetheless, defining intelligence problematics follows often reference points blah 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 blah. Yet they disagree on which cases by intelligence. The diversity is expected. As every single entity, it says one and shape heuristic to which we disagree. Others must like beauty lies in the eyes of beauty blah blah blah. Frequently correlated with brain size. बहुत बड़ा RC है यार ये. Some of the most like cuttlefish, African grey parrots, possess brains firstly different from ours, more intelligent created can be much more so individual attribute. एज ए ग्रुप भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हो. ब्रेन साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी फैक्टर कैन करना पड़ेगा. नॉट जस्ट अ सिंगल एम्पिरिकल ट्रेड बट वे ऑफ आइडेंटिफाई को ऑकरिंग सक्सेस. over intelligence according to rainbow unified concept depending on observer's perspective. Okay, so I have new perspective of intelligence explored. Already explored. Advantages at various points in history. Thus, intelligence as understood today encompasses various capacity and ensure human survival. It is an ever-evolving construct reflecting the nature of construct ही है. लास्ट में बोल दिया उन्होंने. Dynamic human adaptation. It remains a cornerstone of human identity, yet it is a product of our unique evolutionary path and perceptual framework. Essentially, the whole passage was about defining what intelligence is. Let's move on to the questions. According to the passage, why is it challenging to define intelligence? It's a human construct. Shadow answer ये होगा मेरा. Let's see. This is constantly cannot be pinned down to a single. This is true.
is coherent whole that has not been fully understood. ये थोड़ा weird हो गया because it is abstraction. Used to discuss set of human specific related and varies among different cultures. I'll just क्योंकि सारे ही सही लग रहे हैं मुझे, तो I'll just check कि हाँ यहाँ पे भी था. It means process of differences abstraction. This is exemplified. Hominin shaped heuristic. It is based on human set of human specific hominin shape, which we most likely plays in but resistant to automation to uniform standard. It doesn't really have standard. This is tricky why. डिफाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गंदा सी है यार ये. इसका कोई एक सिंगल आंसर लग नहीं रहा है. कॉन्स्टेंटली ऑल इज कोरेंट ऑल इज यूज टू रिसर्च सेट. अगर ये होता तो कितना इजी होता था. इट्स नॉट अ चैलेंज. वेरीज इट्स कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी पिन डाउन टू difficult evolutionary perspective creates advantages. I think one is the perfect answer. Yeah, आगे बढ़ते हैं. Visual following would most strongly support the author's view on intelligence. Discovering a universal metric that accurately measures intelligence. No. Author's viewpoint on intelligence. Intelligence exclusive. Discovering a universal metric that accurately measures across all species. Point is कि you can't measure, right? The point it is diverse. तो तुम universally कैसे metric बनाओगे पता नहीं भाई. But if collective behavior में है then we can say क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल बताया हुआ है. ये गलत हो जाएगा. ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर ये प्रोडक्ट होता तो इतना कोई नहीं होता. ऐसे इतना बड़ा नहीं होता. आई एम नॉट श्योर. बैक स्केप गलती से वो दब गया था. नेक्स्ट one of our usual following basic things why we often anthropomorphize objects and animals. क्योंकि हम सबको ह्यूमन इससे देखते हैं. टेलिंग वॉइस नो the need to understand where we know the lack of clear objective or need to use value redisposition to the value. यही है होपफुली. बट कहीं और लिखा था पैसेज में which we were evaluating hominin shaped heuristic. I think यार ये भी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है यार इसमें. ठीक है. मोशन लाइक दिस recognize and value intelligent behaviors. You know what, like it often appears unexpected. The people as a whole is very indifferent. Research expectations
How exactly is it? I don't know यार, the lack of clear से तो हम इसको anthropomorphize करने का मतलब नहीं हुआ. They need to understand. Maybe this can be overestimate. Basically, we are perceiving it that way. So I think this. ठीक है maybe. अरे यार ठीक है. With the following set of phrases best reflects the key ideas. Fixed intelligent definitions, objective measurement, brain size, correlation, tech advancement, AI limitations. ये तो बिल्कुल ही नहीं है, बी तो गया. ए में evolutionary adapter, diverse survival strategies, subjective perception is there, human centric intelligence is there, evolutionary adaptation is also there. Let me see universal intelligence traits. इसकी बात ही नहीं है कहीं, कल्चरल रिलेशन ये कहीं भी बात नहीं है. Fixed intelligent definitions, neurological individual success marker, cognitive development in humans. सक्सेस मार्कर वगैरह कुछ है ही नहीं भाई. चलो एक तो हो गया भाई. बहुत बड़ा है ये करते हैं. वो गंदी आती है, यही कर लेते हैं. सो द क्वांटम फिजिक्स क्वांटम रेवोल्यूशन ब्ला 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 22 साल के टाइम फ्रेम में हुआ है. तो क्लासरूम मॉडल मटेरियल. तो वही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में बताया गया है. सेंट्रल टू दिस कॉम्प्लीमेंटरिटी पार्टिकल डॉट वी अंडरस्टैंड क्वांटम फिनोमेना. इसलिए we emphasize that the classic concepts are symbolic. More than that, we can observe and measure. ठीक है, तो बोहर ने बोला कि दोनों यूज़ करना चाहिए. ड्यूअलिटी से कंबाइन कर दिया कंसेप्ट. अनसर्टेनिटी Heisenberg is a notion what can know about quantum particles. Deterministic cause effect चला जाएगा क्लासिकल फिजिक्स का. reducing prediction to probabilities rather than uncertainties. और the probabilistic nature आइंस्टाइन आके क्रिटिक कर गया. God does not let either when the theory was incomplete alongside him. Schrödinger ने कैट निकाल दी थ्योरी. Schrodinger's cat is but they were not Einstein or provided an alternative. बोहर की कॉम्प्लीमेंटैरिटी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था. The quantum was further influenced by Nazi during the Nazi time. Quantum religion interfered with political doctrines in Nazi German Jewish physics. The materialistic and probabilistic, which conflicted with the probabilistic nature of quantum physics. तो यहाँ पे political movements are also shaping the ideologies in sciences. Blah blah blah. But face ideological scrutiny. Stalin materialism. Okay. ठीक. तो कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्री के साथ थे, कुछ अगेंस्ट थे. पायलट वेव थ्योरी बॉम्ब करते would probably although initially rejected, Bohr's ideas gained support and further development in quantum theory. As in PPR for the weakness, proposing that interval exhibit non-locality and difference between them that appears to be faster than light. Bombs work on paradox along with theorems explaining the explanation of comparative entanglement of non-locality. These findings laid the groundwork for the modern quantum techniques, including blah blah blah. ठीक है. Projected value of quantum computing is around 9 billion to 93 by 2040. I doubt there is any other example of such a high value in the concepting of physical principles that nobody understands. ठीक है, चलेगा. कहते हैं which one of the following if true would make Bohr's principle complementary less relevant to the understanding of quantum mechanics. या तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पे आ जाए, या तो सिर्फ पार्टिकल या वेव. स्टैंड आंसर तो ही होगा, तब हो जाना चाहिए.
Electron exhibit only particle and all. It can be a possible answer. Quantum can fully be seen using classical without any probabilistic. Even ठीक है भाई. Mutually both particle into single for that complementarity तो वही है ना. तो बोर का complementarity पे पर आ जाता है. बस हम you must use to fully understand. तो अगर वो unify कर रहा है तो that in fact helps less relevant only without any. So this is making it stronger. This is making it stronger. This is making it stronger. This is making it weaker. Shadow answer से answer ये थोड़ा. The author mentions Einstein's critique of quantum mechanics and Schrodinger's thought to illustrate was driven by a combination of intuitive insights. में क्या है? There were critiques certainly, but proponents of both are deterministic and probabilistic models. Discuting debate within the regarding quantum mechanics. This is good. Like other benefiting and its foundational principles, various help in using quantum. It definitely developed. Okay, these criticisms highlight the internal debate within. Yes, it did highlight. Quantum theory फाउंडेशन बना नहीं था तो चैलेंज की बात हो नहीं सकती. वॉज ड्रिवन बाय कॉन्सेप्ट. पता नहीं ये आई एम नॉट श्योर. हुआ नहीं यार. लॉजिकल इंट्यूटिव इनसाइट्स. were there any limitations? I mean उसके थ्योरी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया. So I would say कि this is the best of all. So the following best version main idea. Development of the quantum debates and political influences. Basically, political and scientific critics in shaping the enduring acceptance of having the way. Were there any oppositions? यहाँ पे लिखा है क्या? There was a challenge. There was every time a challenge, but it did help only. No? The development of transformer understanding despite quantum mechanics की ही बात हो रही है. Came the way for its technological applications. Acceptance of quantum mechanics. Acceptance तो हाँ basically we are modern quantum to the way quantum. The revolution despite facing laid the foundation for modern foundation. They both were there. The political and scientific critics played a significant expression. Acceptance of quantum mechanics. Acceptance of quantum mechanics. सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज थे. तो मैं ये चीज़ ज़्यादा कहूँगा. अगेन इसमें से ही आंसर होगा सी एंड डी में से. आई एम नॉट श्योर. फॉलोइंग सेट ऑफ बेस्ट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से चालू हुआ विच इज़ वेरी गुड. बोहर की कॉम्प्लीमेंटरिटी, अनसर्टिनिटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच इज़ परफेक्ट आंसर. और नेक्स्ट देखते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टाइन श्रोडिंगर क्लासिकल मॉडल. बट ड्युअलिटी की कहाँ बात हुई? ड्युअलिटी इज इम्पॉर्टेंट. उसकी नेचर क्वांटम फिनोमेना. Influence of political ideas. This is also correct. Probabilistic nature of quantum mechanics. ये बात हुई थी.
quantum phenomena. इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी आर्टिफिशियल स्क्रूटिनी, uncertainty principle, quantum mechanics and political ideologies. Rise of modern physics, quantum phenomena, probabilistic nature, scientific debates and critiques, influence of political ideologies. This also does, क्योंकि quantum phenomena ये था, ये पार्टिकल रियलिटी ही quantum phenomena थी, तो आज से ये था. चलो 2 चीज़ हो गए, बहुत टाइम लिया मैंने. Oscar Wilde's blah blah Dorian Gray, I think it's very yellow book is such a novel, what would be research into that in the order of instance. Captivated Dorian treats it into the next state experiences. ओके, तो उसके बुक में कुछ एसेंस था, एग्जॉटिक nothing was both healed as divided decadent. इसके बारे में बात करने वाली है. Decadent that is a reckless posture of intense sensation of a link of scandal. Gray was used against Wilde. In 1895 trial, there was a moral accusation in decadence. Decadence has been commercially used to market indulgent experiences, chocolate truffles, spas, using to grow pleasure and values. Victor had this embraced decadence, finding pleasure in witnessing decay. Baudelaire poetry is this pursuit decadence spread to beauty in 1860s. Charles and philosophers भी आ गए, thinkers आ गए थे, movement grappled with the institution of evolution, entropy, urban migration, channel to the religious of the how to make in face of uncertainties. Cool. So कहाँ कहाँ इसका influence है, ये पूरा इसमें trace out हुआ है. प्लेजर rather than traditional. हाँ, तो ये सजेस्टेड कि भाई सेंशुअल प्लेजर भेजिए. लो स्कैंडलस लग रहा है, इसके कैरेक्टर सपोर्ट कर रहा है, हम प्रोडा कर रहा है. तो बेसिकली एक थॉट है, पूरा थॉट है इसके बारे में है. This which is talked about this epigrams and the decadent spirit. Victorian moralism के against was their position, ठीक है, and British sexuality being questioning. It's the British under the world and began to how people thought about their values and challenges of setting views equivalent and threatening to topple over the edge, highlighting over both its danger and its value. तो इसका स्कूल ऑफ थॉट पूरा डिफाइन किया गया essentially. अब let's see for the questions. The following best describes the passage's depiction of Oscar Wilde's trial and its so Wilde's trial highlighted the widespread acceptance of no. Is it? He was tried because it was against. Wilde's was little on the prospect, Wilde led to moral condemnation of the decadent movement. ये है दिखाओ. Did it? Wilde's trial highlighted, ये थोड़ा सा वही हो जाता ना. विल्ले का ट्रायल
तो और कुछ बातें लिखी गई हैं। बस उसके अगेंस्ट ये एक इतना ज़्यादा बताया है नहीं। मॉरल कंडेमनेशन, मॉरल बैकलैश था, बट वाज इट रियली कंडेमनेशन, ये भी एक डाउट है। Did his trial was held and decided? ऐसे मिक्स्ड है भाई, ये तो थोड़ा ऐसा हो गया। वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन, ये एक्सेप्टेंस वाला भी यहाँ कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, स्टिल वो क्या कर सकते हैं टाइम में। चैलेंजिंग विक्टोरियन मोस्ट यू कैन अवार्ड, ठीक है। यू कैन ऑनली इग्नोर द डेकोरेंट अबाउट द रोल इन चैलेंजिंग, ठीक है। हाँ ये कर रहा है मोस्ट वाइडली फॉर प्रोसेस did gain, no. This would weaken, this should weaken, बट अगर वो सीक्रेटली अडेयर कर रहा है, ठीक है, तो फिर दैट्स इशू। डोंट नोट एंड कंटिन्यू ओरलिज्म, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, बट डिड डू रियली चैलेंजिंग विक्टोरियन मॉरलिज्म यहाँ पे था। पता नहीं यार, मोस्ट वीकेंड अबाउट डेकोरेंट चैलेंजिंग मॉरलिज्म, मतलब एट दी रूट दे आर स्टिल विक्टोरियन, सो आई थिंक दिस इज मोर, नाउ आई एम एंकरिंग इट, बट ये भी एक्चुअली लार्जली नॉट कंटिन्यू, तो भी दिस वुड आल्सो वीकन मॉरलिज्म। बट अगर हम इसमें देखें कि लीडिंग फिगर है, तो क्या वो मॉरलिज्म को चैलेंज नहीं कर रहा, अब दे वर मॉरल इन देयर ओन सेंस। अगर एट द लार्ज अगर सोसाइटी में ही कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, वो तो फिर क्या ही मतलब फिर। इट इज ए इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन सी, आई डोंट नो। ठीक है चलो, इट हैज कंप्लीट रिसर्च फिलोसफी going deeper, it has transformed deeper resistance. And this marking the societal values. There was a direct reflection of societal values. No, no. वही साहब, यही है, इसको बहुत फास्ट रीड करना पड़ेगा।
I think this is not the essential idea. Essential idea is that uh, it was wrong to just the language is the basis. Language and non-linguistic thinking, something like that, right? बट इतना अगर सेपरेट वगैरह भी लिखा है तो भी तो वो नहीं एक्टिव होता है। ओके जस्ट अबाउट you strengthen language. So it could strengthen again additional civil language. This would weaken use of. But how did for Franco का conclusion language का रोल अगर हर जगह है then it's an issue ना, ठीक है। अगर एफेजिया वाले भी हैं तो then it's an issue। ये तो बिल्कुल नहीं, हम सब कॉग्निटिव टास्क, ये भी नहीं, ये भी नहीं, language में तो group of languages activity ना ये तो बहुत ही इजी था। चलो स्टार्ट करते हैं FIB से। The term butterfly effects of use the to describe chaos of the fly happening instead of a chain of information. 3 weeks later, colloquially known as the butterfly effect. Chaos theory can shatter a combination of cause and effect. It suggests that distribution was this seemingly scenario. The scenario is about this, so I think it should be 3. Much of that likely comes from 1 giga projects now. So it is set to become the world's largest. Much of that aimed at all in this countries is not put values forecast to sunset. गीगा प्रोजेक्ट्स की बात हुई है क्या? हो सकता है यहाँ पे जाए known as मतलब that is about output value I feel, and again so I think 2 पे आना चाहिए, but I really don't have time, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ऑड वन है यार, ऑड वन में बहुत टाइम जाता है। ये शॉर्ट ऑफ packaging and situation
controlling the manual of drawing masses. Let's say it's not a factory, it does not have a control center. Organizational assumption of centralized control distorts our ठीक है factories against control बहुत बड़ा है. रैंडम शिफ्ट करो, कुछ भी मार्क करो, टाइम तो बचा नहीं है. Ability also sell for the principal party. Both board and web observation to RC drive from to personal abstractions at odds with the maximum RC complementarity. So even RC components survive due to lack of RC. ये तो वही वाला RC का है. तो वेट क्या था. कुछ भी मार्क कर दो, टाइम बचा नहीं है. जस्ट इसमें और मार्क कर दो, रैंडम सही हो गया तो हो गया. आई डोंट नो, बहुत ख़राब गेम ऑफ. तो ठीक है भाई, अब जो भी था तो क्योंकि मारे मैंने. दिस इज इट. सो अगेन जो लोग बोलते हैं कि सारे आरसीज कर लो, यू डोंट रियली हैव टू डू ऑल आरसीज. समटाइम्स यू कैन ऑल्सो डू इट विदाउट. अब देख लो, इसमें पीपल हैव स्कोर्ड 72, दे आर गॉड्स. हम उतना नहीं कर पाए, बट इट इज़ स्टिल डिसेंट इनफ. तो देखते हैं क्या इश्यूज़ क्या थे. कुछ तुक्के हिट हुए मेरे, कोई तुक्का हिट नहीं होता. तो यही है, तुक्के जनरली हिट नहीं होते. मेरा FI भी ईजी था, मैंने उसमें खेला है. मैं सोच रहा था इसे मार्क करूँ, बट टाइम नहीं बचा. ये गलत हो गया, इसका पेन लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि वो सही होना चाहिए था. ठीक है, कोई बात नहीं. सी में क्या इशू था, इट फोकसेस मोर ऑन मार्किंग्स क्रिटिक रादर देन द बॉर्डर. इशू विद द टेक्स्ट बुक. अच्छा, तो यहाँ पे ये था कि मेन आपको टेक्स्ट बुक और MG पे बात करनी थी, मैंने उस पर कर दिया. इसको तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था. एंड जितनी RCs हैं वो मैंने सारी कर ली आराम आराम से. तो देख लो, RC में एक्यूरेसी काफ़ी सही निकल के आई, बट VA के लिए